Namaskar. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to yet another edition of Wait for Eight, hosted jointly by SIRF News and Satyanveshi Bharat. Our subject today is the result of the US presidential election. While the tendency or the inclination is not very clear as yet, because the Republicans are saying they're going to court, they're moving the court in different districts, different states, and perhaps the matter will go up to the Supreme Court of the United States. But very clearly, the mandate is not very clear this way or that way, whatever be the exact count. So the point we are discussing tonight, ladies and gentlemen, is whether there are things that Trump did not do right, or there are things that the voters of America did not do right, whether his voters let him down. Are there lessons for Indians? क्या हमारे देश के जो राजनेता हैं उन्हें भी कुछ सीख लेनी चाहिए इस परिणाम से? क्या ट्रंप ने किया जो सही किया, क्या किया जो गलत किया? उनके जो समर्थक वर्ग हैं वो किस तरह से उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी, किस तरह से वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हुए या नहीं हुए? क्या हमारे देश में भी किसी न किसी दल के साथ ऐसा होता है जो राष्ट्रीयता की बात करती है, जो राष्ट्रवाद की बात करती है, जो चीन के खिलाफ बोलती है, जो पाकिस्तान के खिलाफ बोलती है, जो आतंकवाद के खिलाफ बोलती है? क्या ऐसी पार्टी का ऐसा ही हश्र होता है? या फिर इसके साथ साथ डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में देयर आर थिंग्स दैट यू नीड टू डू बिसाइड्स बीइंग पैट्रियोटिक? I'm not using the word nationalistic because that has negative connotations in the US. But besides being patriotic, what are the things you ought to do in politics while in power so that you can retain power, so that you can stay in office? To discuss these points, we have with us Professor Ramesh Rao. We also have Mr. Mantosh Sharma. Both of them are joining us from the US. We have political analyst Ashish Sharma. We have political analyst Yuvraj Singh. From Satyanveshi Bharat, we have Kumar Shrikant. I'll go first of all to Professor Rao. Professor Rao, if you could put it in perspective, just that, the results, the tendency or the trend that we see so far, even though all the states have not announced the results formally. Yes. Professor Rao. Yes. Good evening, and thank you for inviting me to be on this panel. I think the whole world is watching, and I'm in Georgia, one of the states in contention. We have kind of turned blue this time. Georgia has been always a red state. It's a southern state. But then over the past couple of decades, Georgia has, got a more diverse population. So here in Columbus, for example, I teach at Columbus State University. One of the small blue regions in Sea of the same Atlanta is where the majority of the population of Georgia reside, and it is a blue region surrounded by red. With all that said, I think Trump and his team, and especially I think given the nature and personality of Mr. Trump, he will try to delay acknowledging what is inevitable and that he has lost. Maybe yes, surely all margins. Professor Rao, was this inevitable? Where down the we will. Was this inevitable, Professor Rao? Was this inevitable? Did he have to be defeated? Okay. Yeah. Yes. Did he have to lose? Yeah. Yeah, I think he had to lose simply in terms of his personality. There is so much of policy and accomplishment could have ridden horse victory. But alas, just the nature of the man ensured
that even those who supported some of the policies were tired of this man. And I am speaking for myself, but then also having observed these past 4 years, the variety of reactions, the variety of thinking, both, and again, the never Trumpers are Republicans, not Democrats. And why did they say never Trumpers? It's simply because of the nature of this man. And that, I think, and he had all the opportunity to kind of change that narrative. Unfortunately, he let go because he's just, as so many people have kept saying, he's a selfish, narcissistic, self-centered man who just doesn't know when to stop tweeting and when to stop self-aggrandizement. And I think that is you do not think that necessarily his policies were wrong. Professor Rao, you do not think necessarily that his policies were wrong. What about his China policy? What about his straight speak? What about his candor? The good things about them. For example, he is one of the rare politicians who could speak out against Islamic terrorism. Yeah, I can take it with that question. Very briefly, and I will let Mantosh speak about it. But yes, all of these messages that came from Trump were garbled. He never could speak straight. People say he spoke straight. Sorry, he could not speak straight. If only he did, he would have assured himself a second term. Yes, there are people who liked his policy, and that's why he got so many votes. For example, in terms of law and order, in terms of his China policy, in terms of make it in America policy. Those are things. The markets have done well. Unemployment has been low. Those are issues that people liked him for. But unfortunately, he could not sell that tale very well. Right. श्रीकांत जी, मंतोष जी, मैं आपके पास आ रहा हूं. श्रीकांत जी, प्रोफेसर राव कह रहे हैं कि राष्ट्रवादी होने के साथ साथ आपको कुछ और भी होना पड़ता है. जो ट्रंप का व्यक्तित्व है वो पॉलिश्ड व्यक्तित्व नहीं है. उनसे बात करके, उनसे मिलकर, उनको सुनकर आपको अच्छा नहीं फील होता है. आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये एक ऐसा आदमी है जिसके समर्थन में आपको खड़ा होना चाहिए. बहुत रूखा सूखा व्यक्तित्व है, और इसके अलावा जो उनमें अच्छाइयां हैं, उन अच्छाइयों को वो ठीक से सेल नहीं कर पाए. या फिर आपको लगता है कि जिनको उनके समर्थन में खड़ा होना चाहिए, यानी उनके वोटर, उनको जितनी भारी संख्या में आना चाहिए था वोटिंग के दिन या उससे पहले, वहां तो लंबा प्रोसेस चलता है, वो उस संख्या में उभरे नहीं. आप 2004 का चुनाव याद कीजिए कि हर कोई सोच रहा था कि वाजपेयी तो जीतेंगे ही, तो जितने सारे भाजपा के भारी संख्या में वोटर निकले ही नहीं वोट करने के लिए. जी, क्या लगता है? देखिए, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. लेकिन मैं एक छोटी सी अपनी बात शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे बताना चाहूंगा. आपने देखा होगा जिस तरीके से तमाम अमेरिकन न्यूज चैनल्स या पोल्स बता रहे थे कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उनकी करारी हार होगी और बाइडेन जो है वो सिरे से क्लीन स्वीप करेंगे. एक तरीके से आप देखिए, लग रहा था कि बाइडेन कैसी आंधी की तरह से आएंगे कि डोनाल्ड ट्रंप उसमें बह ही जाएंगे बिल्कुल. लेकिन कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप की आप तमाम आलोचना कर सकते हैं, तमाम कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन एक मुंहफट आदमी है जो ब्लंड तरीके से अपनी बातें रखता है. और मुझे लगता है कि अमेरिका के पूरे इतिहास में ऐसा एक राष्ट्रपति अमेरिकन ने कभी देखा नहीं होगा कि वो सीधे सीधे बात करता है और वो पत्रकार को भी सीधे सीधे कह देता है कि आप चाइनीज एजेंट है, मुझे आपसे बात नहीं करनी. वो चाइना को सीधे सीधे वुहान वायरस से जोड़ देता है. वो तो वुहान वायरस तो चाइनीज ही है, वुहान का है. एक बात में आपको टोक रहा हूं श्रीकांत जी, आपको अगर याद होगा तो ममता बनर्जी भी हमारे देश में, ममता बनर्जी पत्रकारों से बिल्कुल ऐसे रिएक्ट करती है. आप उनके खिलाफ बोलिए तो आपको सीधे कह देंगे कि आप भाजपाई है. पहले कहती थी कि नक्सल हैं, अभी कह देंगे भाजपाई है. तो वो भी वैसे ही बर्ताव करती है प्रेस वार्ता के दौरान. जी नहीं, वो तो करती हैं. मैं तो 2-3 बार दिल्ली में उनकी पीसी में मैं 2-3 बार भुगत चुका हूँ सारी चीजों को. मैं बंगाल का तो नहीं हूँ, तो बंगाल में जाके मैंने पीसी नहीं देखी है उनकी, कवर की है. लेकिन दिल्ली में 2-3 पीसी और साउंड बाइट के लिए मैं झेल चुका हूँ, मुझे लगता है. लेकिन ममता बनर्जी क्या है कि वो बंगाल के बाहर कुछ सोच नहीं रही है.
ममता बनर्जी बंगाल में ही कूप मंडूक की तरह उसी में रहकर बंगाल के बारे में सोच रही है। पर ट्रम्प जिसे अमेरिका जैसे इतना बृहद देश, बहुत बड़ा देश चलाना है, वो बिल्कुल ब्लंट है। वो हर एक बात को लेकर अपना दृष्टिकोण रखते हैं। इस्लाम को लेकर वो क्लियर कट बोलते हैं, और हिंदुस्तान को लेकर, व्यापार को लेकर वो क्लियर कट कह रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ट्रम्प की ये जो साफ गोई है, साफ गोई, उससे थोड़े जो लिबरल मानसिकता वाले जो लोग होते हैं ना, वो कहीं ना कहीं आहत होते हैं। और जो अमेरिकन खास तौर से अलग अलग दृष्टिकोण के नहीं, लेकिन एक दृष्टिकोण के, यार नहीं ठीक है रहने दो, जाने दो, वो सो कोल्ड लिबरल सेकुलर जो होते हैं ना, उनको दुख पहुंचता है। वो जमीन में कोई उनकी कब्र खोदे, उनको ये बात बिल्कुल ठीक लगेगी, लेकिन कोई सीधा सपाट बात करे वो ठीक नहीं लगेगी। और ज्यादातर आप देखेंगे राष्ट्राध्यक्ष जो होते हैं वो कुछ डिप्लोमेट होते हैं। आपके देश के तो 4 प्रधानमंत्री विदेश मंत्री भी थे। आपके देश के तो 3 से 4 प्रधानमंत्री एक समय पे विदेश मंत्री भी थे, क्योंकि उन्हें विदेश मंत्री की आवश्यकता नहीं थी, डिप्लोमेट की आवश्यकता नहीं थी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो देखिए उसे डिप्लोमेट ही रहना चाहिए, और जिसमें ट्रंप नहीं थे। बाइडेन आज ही आ रहे हैं और आज ही वो कह रहे हैं कि हम 5 लाख से ज्यादा भारतीयों को भी नागरिकता दिलाएंगे, मतलब वीजा में जो दिक्कतें हैं उसको भी ठीक करेंगे। ये एक तरीके से खतरे की घंटी है, मैं मानता हूं। इस पूरे विश्व के तमाम राइटिस्ट जितनी भी पार्टियां हैं और राइटिस्ट जितनी भी सरकारें हैं, उनके लिए खतरे की घंटी है। बहुत बड़ी घंटी ये है कि केवल राष्ट्रवाद की हांडी बार बार आग पर चढ़ाकर कुछ होने वाला नहीं है। पाकिस्तान और चाइना को गरियाकर कुछ होने वाला नहीं है। पोलराइजेशन करवा के आप बार बार सत्ता में नहीं आएंगे। 370 और 35A पर कुछ नहीं होने वाला है भैया। कुछ जमीन पर भी करके दिखाइए, कुछ बेसिक भी चीजें करके दिखाइए, है ना। तो मैं ये अपनी सरकार के लिए कहूंगा, जो भारत की सरकार है, कि कुछ रोजगार की भी बात करें, कुछ आर्थिक मुद्दों की भी बात करें। तो हमेशा ये खतरे की घंटी लगातार बजी है, और मुझे लगता है कि वर्तमानिक सरकार, भारत की सरकार, इससे कुछ चीजें सीखेगी। लेकिन एक चीज और है कि नरेंद्र मोदी ट्रंप की तरह स्पष्टवादी नहीं है, ध्यान रखिए। ये सरकार कहती कुछ, करती कुछ और है, और जो करती है उसे कहने में डरती है, झिझकती है। तो ये डिप्लोमेसी मानिए या कुछ भी मानिए, और खास तौर से जो लोग पालकी ढोकर नरेंद्र मोदी को सत्ता में लाए 2014 में, और उन लोगों ने भारी कंधों से, जख्म लगे कंधों से, जहां पर 14 की पालकी ढोई थी, उसी कंधे पर 19 की भी पालकी ढोई और फिर से सत्ता में लाए। उसके बाद और प्रचंड में लाए, 303 में लाए। वो लोग भी अब ये सोच रहे हैं कि यार हम केवल पालकी ढोने के लिए है क्या, केवल राष्ट्रवाद की पालकी ठोकर हम लोग इनको ले आए, और बाद में ना वो धोबी का कुत्ता, ना घर का, ना घाट का, इधर से भी मारे जाते हैं, उधर से भी दुत्कारे जाते हैं, और केवल इलेक्शन टाइम पर हमको सोचने आता है। तो ये बौद्धिक जमात भी अब सोचने लगा है, वो वोटर्स भी सोचने लगे, और उन वोटर्स का खामियाजा ये बिहार इलेक्शन में ये सब चुकाएंगे। मैं आपको बताओ चलो। जी मंतोष जी, मेरा प्रश्न भारतीय मूल के वोटरों के बारे में है। तो एक, जैसा हमने पिछली बार चर्चा की थी जब अमेरिका के बारे में चर्चा कर रहे थे, the concerns of people of Indian origin, they change entirely once they move from India to the United States. While in India, you are concerned more about America's Southeast Asia policy. You are concerned about how it treats Pakistan vis-a-vis India. You are concerned about how it controls or keeps under check the expansionist tendencies of China. Do not these things that concern India concern an Indian anymore once he turns into an American? बहुत अच्छा सवाल है, and I will come at it, but थोड़ा सा हम क्लैरिफिकेशन यहाँ देंगे, क्योंकि होल पैनल आपने टॉपिक जो इंट्रोड्यूस किया था, mostly we are talking about the outcome, why politician is doing this way or that way, whether Trump यहाँ रहे और वहां रहे। अब कोई पॉलिटिशियन ऐसी हरकतें करता क्यों है? वो इसलिए करता है, अगर स्टडी करेंगे तो जिस ढंग से वो अपना सोशल कोलिशन बनता है, उस सोशल कोलिशन को फीड करने के लिए उस ढंग की हरकतें करता है। हम लोग हरकतों पे इंटरप्रेट कर रहे हैं आज। अब हम लोग सबको समझना पड़ेगा, एंड ट्रम्प पे हमने काफी स्टडी किया। 2016 में भी मैंने कहा था कि ट्रम्प इज विनिंग,
एंड मैसिवली 3-4 जगह मैंने लिखा था, मैगजीन में आई थी। ट्रंप ने एक कोलिशन बनाया। वो कोलिशन जो मैन्युफैक्चरिंग बेल्ट है, रस्ट बेल्ट है, सन बेल्ट है, वहां के सब अर्बन व्हाइट वोटर्स, रूरल व्हाइट वोटर्स एंड क्रिश्चियन फेथ का इवेंजेलिकल सॉलिड ग्रुप, 3 लोग का वेरी सॉलिड कोलिशन बनाया है ट्रंप ने 2016 से आज तक, और बहुत ही सॉलिड है। जो इतनी वोटिंग, जो 70 मिलियन के आसपास अभी वोटिंग है, पोलिंग इज नॉट एट कंप्लीट, अपने आप में बहुत बड़ा हिस्टोरिकल वोट्स है। सो इट इज नॉट दैट बाइडेन हैज रन ओवर इट एंड सीधे करेंगे। यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये मैंडेट क्लियर नहीं है कि किस तरह से, कहीं नहीं है। तो ये पहले आपको फंडामेंटली समझना होगा कि व्हाट इज उसके मेन कोलिशन के पावर है, और जो वो बोलता है किसको फीड करने के लिए बोलता है। तो व्हेन ही टॉक अबाउट चाइना, व्हेन ही टॉक अबाउट द बॉर्डर, तो बॉर्डर और इमिग्रेशन के अगेंस्ट बोलना, ये सब ये अपने रूरल बेस को, रूरल व्हाइट बेस को फीड करने के लिए बोलता है। एंड द रीजन बिहाइंड इट कि ओबामा के ही डायरेक्शन में एक कल्चरल आइडेंटिटी का इशू व्हाइट रूरल बेस में आया, डर गए लोग। राष्ट्रीयता एक दूसरी बात है, राष्ट्रीयता चाहे डेमोक्रेट रहे। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक मिनट के लिए टोक रहा हूँ मंतोष जी, यू कैन कंटिन्यू आफ्टर दैट। लेट मी शेयर विद द ऑडियंस आवर रीसेंट फाइंडिंग्स। हमने ये पाया, जब हमने डेमोग्राफिकली डिवाइड किया कि किस किस ने ट्रंप को वोट दिया और किसने बाइडेन को वोट दिया, तो हमने ये पाया कि जो माना जाता है कि ट्रंप का जो समर्थक वर्ग है उसने ट्रंप को डुबा दिया, और जिसको माना जा रहा था कि ये ट्रंप के विरोध में खड़े होंगे, जैसे ब्लैक्स हैं, हिस्पैनिक्स हैं, नॉन व्हाइट पॉपुलेशन जो है, वहां बल्कि 2016 के मुकाबले बेहतर रिजल्ट किया है रिपब्लिकन ने। और सबसे ज्यादा ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है जो श्वेत वर्ण के लोग हैं, उसका जो एजेड पॉपुलेशन है हमारे देश में, जिसको सीनियर सिटीजन कहा जाता है, उन्होंने बढ़ चढ़ के ट्रंप के खिलाफ वोट दिया। नमस्ते ट्रंप भी फेल हो गया ना सुजीत जी। ये नमस्ते ट्रंप और ये तमाम जो ये भारतीय लोग थे वो सब भी फेल हो गया। ये शुरू से ही गलत नॉमिनेशन है कि नमस्ते ट्रंप ट्रंप के लिए किया गया था। नमस्ते ट्रंप मोदी के लिए था, मोदी के ऑडियंस इंडिया के लिए, यहाँ के लिए नहीं था। टेक इट दैट ऑन द प्लेट। ओके, तो मैं जो पॉइंट था, एक स्ट्रॉन्ग कोलिशन था, वो कोलिशन। मंतोष जी सवाल एक और है माफी के साथ, ये अब की बार मोदी बोल रहे थे तो वो किसके लिए बोल रहे थे मंतोष जी? आपकी बार ट्रंप सरकार, आपकी बार ट्रंप सरकार। क्या हुआ आपकी बार ट्रंप सरकार? he was synchronizing his aspiration, he sells aspiration and hopes not to US public, he sells aspiration and hope in the terms for Indian middle class जो cheer करता है उसको करते हैं। If आप political science और political strategy समझते हैं तो I work for few people, that's why I'm saying those things. So उस लाइन से आपको समझा रहे हैं, politician का outer interface messaging is different what they are targeting. So ये तीन कोलिशन कहीं टूटा नहीं है। तो कमिंग बैक टू योर पॉइंट सुरजीत, जो भी यू मेंशन इट, व्हाट हैपेंड इन कोविड-19? सो वो तीनों नहीं हुआ। चाइना से लड़ना, मेक्सिको से लड़ना, इमिग्रेशन से लड़ना, ये तीनों को कंटिन्यूअस फीडबैक के लिए करना था, और उसी के लिए डेमोक्रेट के लिए बाइडेन से बड़ा अच्छा कैंडिडेट कोई नहीं होता जो उस तीन में से एक कोलिशन को चोट करता, और वो था सब अर्बन वोट्स। मिडवेस्ट में, रस्ट बेल्ट में नौकरियां चली गई। ये जितना ये ग्लोबलाइजेशन हुआ, फैक्ट्री में काम करते थे, पार्ट्स और ये सब का मैन्युफैक्चरिंग हब चाइना हो गया, and people started losing jobs, and those were the white voters once they were highly democrats, unionized guys, and they were frustrated. Trump rightly understood their grievances, और उसके कारण ये कोलिशन बनाया, मैं लाऊंगा, मैं चाइना को दिखाऊंगा, जॉब यहाँ लाऊंगा, ये करूंगा। आप कह रहे हैं कि वो उन्होंने वादा तो किया लेकिन निभा नहीं पाए, उस वादे को निभा नहीं पाए। लोगों ने साथ नहीं छोड़ा इस इलेक्शन में, वो ग्रुप। अभी मैं आ रहा हूँ, हरे साथ कहाँ छूटा है उनका। नहीं, वो ये पॉइंट आप होल्ड करके रखिए। I'll go back to Professor Rao just for a while. You know, I want to understand the American perception. Professor Rao, if you can unmute yourself. Yes. You know, I have a lingering question in my mind. When we study American history, we all know it's the land of immigrants. We have heard a lot about the so-called melting pot. That's all right.
Initially, the settlers were Europeans, mostly from England, but also from France and Germany, etc. There used to be slavery in America that was later on abolished. There was racism that is now illegal by law. All those things are all right. But when you say that America has been built by immigrants, I feel that is only a partial truth. मैं ऐसा क्यों सोचता हूं कि ये पूर्ण सच नहीं है, कि ये सच है कि जो माइग्रेंट लोग हैं उन्होंने अमेरिका को बनाया, लेकिन किन माइग्रेंट्स ने बनाया, आप इस पर भी सोचिए। अमेरिका को यूरोपियन माइग्रेंट्स ने बनाया, सीरिया के लोगों ने आकर नहीं बनाया, मेक्सिको के लोगों ने आकर नहीं बनाया। And therefore, when there is a clamor to let everybody in and the Republicans oppose it, why is it such a politically incorrect thing to do? It's an instinct of preserving your land, preserving your culture, preserving the way of American life. Why should you welcome all Mexicans? Why should you welcome Syrian refugees, for example? They are not the people who built America. Yes, Professor Rao. Yeah, you make a valid point. And this is something that I have said that in the context of India, for example. You know, I mean, forget about 20 million illegal Bangladeshis. In Bengaluru, where I am originally from, you know, every 5 years, 10 years, there are protests and against Tamilians in Bengaluru or Biharis or whoever. Okay. And so this, you know, and I don't know, I forget who said this, but demography is destiny. and I think the original white settlers and majority whites do now at this point really kind of feel that kind of an existential threat. Existential in terms of the kinds of culture, Christianity, Western civilization, the whole thing. Okay, and I think it is natural. And when I find, for example, some of my very good friends saying, you know, America is racist and so on and so forth, then I said, why did you come here? It's not as if we didn't know about these things. It is both a land of opportunity, but there is also this whole historical baggage that if we fail to acknowledge while we stood in, you know, in line in front of the U.S. consulate in Chennai or Mumbai or wherever, and now say, oh, you know, America is racist, we are being hypocritical. And I think, you know, and we fail to acknowledge the tremendous contribution of, you know, the white West to America. It's they who built it. You know, sure, they built it through slave labor, immigrant labor, so on and so forth. But it was their plan. They put their plan into action. Okay? We got to acknowledge that. Because without that kind of a foundation that they laid, I would not have been able to come here and do my right, become a professor, do whatever. But anyway, the entry of Indians has never been an issue. You know, other than putting up some hurdles in the form of H-1B visa, Indians have never been an issue. Jews have never been an issue. In fact, Jews are another set of people who made America great. A lot of scientific inventions that America seeks pride in are credited to Jews. They've been a great tribe, I would say, in the development of America. But when you talk about Mexicans, it is like talking about Bangladeshis in India. Mantosh, what do you think about it? I have different opinion on that one. So coming to clarify the point which you obstructed, which you injected at that point, you're right. And that was one of the cause of losing this election. Usually the population of the 65 plus voter is 25% in America. 35% vote base. Because of the COVID situation now, they were upset with this government and they voted, some of them voted against. Even before this election in pre-poll, Trump was minus 20 point in some of the polling in that category. In 2016, he led by 7 point on Hillary on that category. So that was one of the factors, but not all, just to clarify that point. Regarding this labor and migration and everything, things are very porous. Myself here, I moved here in 99 from Canada.
and I came through the NAFTA Okay. agreement. We had a Canadian citizenship, so NAFTA agreement is there of working freely between North and South countries here. Mexico. Now, my specific question is, when a politician points this thing out, is he damned as an intolerant, exclusivist kind of person? Is that what happened to Trump? आ रहा हूं मैं आपके पास, हाँ श्रीकांत जी, हाँ नहीं, मेरा एक सवाल था बस। हाँ पूछिए। मैं सवाल आपसे भी और मंतोष जी से पूछना चाह रहा था। प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, मुझे लगता है उनके बेहतर और बढ़िया संबंध जो हैं वर्तमानिक भारत के जो विदेश मंत्री हैं उनके साथ उतने बेहतर और बढ़िया नहीं है। मैं थोड़ा लीक से अलग पूछ रहा हूं, मैं माफी के साथ। तो क्या आपको लगता है, सुजीत जी और मंतोष जी से भी मेरा सवाल रहेगा, क्या आपको लगता है कि क्या उसका कुछ प्रभाव इस वक्त भारत और अमेरिका के संबंधों पर पड़ेगा? क्योंकि प्रमिला जयपाल, कमला हैरिस, नॉट एट ऑल। ये लोग भूल जाते हैं अमेरिका कैसे रिलेशन दुनिया से बनाता है। अमेरिका का रिलेशनशिप ट्रांजैक्शनल होता है, वर्ड मेरा ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शनल है और एक फ्रेमवर्क में होता है। तो ये जो जितना जो अभी आप एक हाथ दे एक हाथ ले का रिश्ता रखता है, एक हाथ ले और एक फ्रेमवर्क में होता है, और फ्रेमवर्क 15 साल के डेफिनेशन पे होता है, मोमेंटरली नहीं होता है। तो स्ट्रेटेजिकली इट इज डिफाइंड इन वॉशिंगटन think tank that India is going to be our strategic allies in different, and that alliance will be military as well as on the business. इसको भी अपना बाजार बेचना है। चाइना से अगर दिक्कत है तो नया बाजार कहाँ लाएगा? इंडिया से बड़ा बाजार इसको कहाँ मिलेगा? इवन चाइना 90 बिलियन बेचता है इसी इंडिया। प्रश्न पे just hold your thoughts, Mantosh. I'll go to Ashish Sharma. Ashish, just come in on this one. पहला प्रश्न तो आपसे ये, कोई भारतीय राजनेता कहता है कि हम बांग्लादेशी को नहीं घुसने देंगे, तो क्या वो असहिष्णु हो जाता है? तो इसी प्रकार अगर ट्रंप कहता है कि मैक्सिकन वॉल हम बना देंगे ताकि कोई मैक्सिकन ना घुस पाए, तो उसकी छवि क्यों खराब हो जाती है? जो राष्ट्रभक्त जो अमेरिकी है उनको तो सपोर्ट करना चाहिए, वो उनके खिलाफ क्यों हो जाते हैं? So the primary question is that whether you are entering a country through a legal method or you are आपकी आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। So if you are coming, हाँ अब साफ है। हाँ hello. So what I was trying to say that how you are entering a country, are you entering the country through a legal means or you are entering the country through illegal means? So that defines your migration to a country. So if you are entering a country, I'm talking about means, infiltration, not migration. Or to be specific. Okay. So when infiltration is there, I think any country will not like to acknowledge the infiltrators as such. They will try to basically evict them officially. Yes, but see, Indian context, we have to see it differently, because then there is a then from where they are immigrating, they are infiltrating from the Bangladesh, which is having a Muslim majority, and then when they are infiltrating, they are basically going across and creating. लेकिन आशीष जी, आपको इस बात को ध्यान में रखना होगा कि हमारा संदर्भ, हमारा आज का विषय ट्रंप है, तो आप उसी परिप्रेक्ष्य में बताइए कि अगर मोदी ये कहता है कि हम एक बांग्लादेश वॉल बना देंगे, कोई बांग्लादेशी घुसपैठ नहीं कर पाएगा, तो विश्व में क्या संदेश जाएगा, क्या मैसेज जाएगा, और भारत की कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या मैसेज जाएगा? और अगर गलत मैसेज जाता है तो क्या वो गलत है या सही है? जब ट्रंप ये बोलते हैं कि मैक्सिकन वॉल बनेगी और मैक्सिकन वॉल बनाने के लिए प्रोसेस स्टार्ट करा जाता है, पता नहीं बन पाई, बनी है क्या बनी है, कह सकते हैं नहीं बन पाई। वॉल के अंदर से भी वो वॉल के अंदर से नीचे काफी टनल्स बने हुए हैं, तो वो सबको पता है कि वहां से जो इमिग्रेशन है या फिल्ट्रेशन है, itself is an industry, so it is becoming a part of the industry there. Okay, so everyone acknowledges the problem, only thing is that they don't want to solve it in that way. But when Trump says it, he is basically speaking, as Mantosh was saying, basically the people who have lost the jobs because of the people who are coming from the neighboring countries and doing the work at the cheaper labor, at the cheaper cost. But the people there, they want basically certain wages,
And when there is basically a person who is coming, who is able to do your job in like the lesser dollars, then the job is getting shifted to that person. So it's like a stealing of the job. Okay. Now, on the contrary, I should think that why should I have that high expectation that I should be getting $8 for a similar job which a person is doing for $2? No, but I'm not seeking an economic answer. I'm not seeking the economics of it. I am asking about the political part. You know, the political part. If an American politician appears to be anti-infiltration, why should it spoil his public image? It should enhance his image rather. Why is the opposite happening? That is my question. Yes, so the enhancing of the image is happening among the Republican voters, but there is a section which may be basically, as you can say, that there may be the swing voters which has basically come to the Republican side because of the too much political correctness of that American establishment at that time. They may be now migrating to their own voter fold, like back to the Democratic fold, just because like they were saying that, okay, the things have been now settled, but it is going to an extreme. They should not go to the extreme. There should be some moderateness in this. Why every time basically this message need to मेरा एक विचार है युवराज जी, मुझे ऐसा लगता है, you can come in on this, that there is a large section of the American population that has got a bit of a suicidal tendency, a bit of a, I would say they are a self-flagellation brigade. They enjoy the fact that, you know, America is at the receiving end. I'll give you an example, and I often quote this in different chat shows. During the Vietnam War, which America fought for 30 long years, when it was about 15 years, when America was about 15 years into that war, people poured out into the streets of America. They destroyed properties, they abused the government, and the police action taken on those demonstrators was condemned. Not only that, इसके बाद मैं अगले पहलू पे आ रहा हूं, उसके बाद से आज तक हॉलीवुड में जितनी भी फिल्में बनी हैं वियतनाम वॉर को लेकर, उसमें जॉन एफ कैनेडी का महिमा मंडन किया गया है और उसमें रिचर्ड निक्सन को बुरा दिखाया गया है कि उस आदमी की वजह से हमारी सेना बहुत 7 समुंदर पार जाकर हमारी सेना मर रही थी एक ऐसे कारण से जिससे हमें कोई लेना देना नहीं था। जबकि अगर आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स देखें तो रिचर्ड निक्सन ने जितने सैनिक वापस बुलाए वियतनाम से, उतने सैनिक वापस कैनेडी ने नहीं बुलाए थे। और केवल यही नहीं, निक्सन के बाद ही वियतनाम का जो युद्ध है वो समाप्त हुआ। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका है, जैसे भारत में भी है, वो हमेशा हल्ला मचाने में विश्वास रखती है। वो ब्लैक लाइव्स मैटर की तरह सड़कों में उतर के गुंडागर्दी करने में अपना जो है वो समझती है कि ये हमने एक बहुत महान काम कर दिया है। ये अराजकतावादी जो जनता है अमेरिका के अंदर, इसके बारे में आपके क्या विचार है युवराज जी, या फिर आप कहते हैं कि मेरा आकलन ही सही नहीं है? युवराज जी। नहीं सर, किसी तरह से तो जो आप कह रहे हैं दैट्स करेक्ट, क्योंकि जैसे कि आपने कहा कि the people were criticizing Nixon, the manner in which he sent the troops across and continued the war, and he actually did not. He was in the middle of it. Yeah. Yes. You know, but sir, Johnson had sent far more troops to Lyndon Johnson. Yes, sir, during that period. Yes. But sir, in this case, ironically, Donald Trump has gotten back more troops than the previous regime of President Obama. Exactly. And but mark my words, 10 or 20 years from now, Hollywood is going to project Trump as a villain, saying that he is the guy who was sending our troops abroad. And this because Hollywood has always been pro-democrat, right? Yes, sir. Yes, sir. That's correct, sir. Yes. Because this is despite there was this video of this army veteran from the US who spoke to Biden, President-elect Biden, and told him that, sir, you have sent troops and we have killed civilians in the Middle East. We have started wars, and it was during your regime under President Obama. So that way, there's this perception of President Trump
which is a sort of a person who is a loud mouth, which he is, but one can't actually deny that he got the troops back. He has signed the Abraham Accords with countries which would have never seen each other eye to eye for a period of time, because there's a realignment going on in the Middle East also. So it was not entirely out of the blue, but he played that well. Another thing is, since you spoke of people who they harm themselves, and you spoke of the American public in some ways, this is just a small little fact which people have ignored because of the Biden-Harris or Harris-Biden victory, is that yesterday the number of COVID infections has risen to 1.2, or rather 1,28,000 cases. आपको लगता है बाइडेन रोक पाएगा कोविड का इसको? कोविड जो स्प्रेड कर रहा है, बाइडेन आके रोक जाएगा क्या? सुजीत जी, एक मिनट में बस एक सेंटेंस बोलना चाहूंगा। मुझे लगता है कि जितने भी सरकारें अभी फिलहाल हारेंगी, क्योंकि वर्तमानिक सरकारें पूरे विश्व में जितनी भी हैं, अगर हाल फिलहाल चुनाव होता है तो ज्यादातर वो सरकारें हारेंगी, और उनके पीछे कारण जो है ये कोविड को मिस हैंडलिंग को लेकर रहेगा। ये वो राज्य की हूँ, वो केंद्र की हूँ, पूरे विश्व में आप देखिएगा थोड़ा बहुत। लेकिन हम अगर ओबामा हेल्थ केयर की बात करें तो वो भी कोई खास सक्सेसफुल नहीं रहा था, तो इसलिए बाइडेन के आने पर या कोई इस तरह का वेलफेयर स्कीम शुरू कर देते हैं वो हेल्थ सेक्टर में, और उससे बिल्कुल कोविड काबू में आ जाएगा, ऐसा लगता है क्या अमेरिका के लोगों को? Let me go to Professor Rao. Let me go back to Professor Rao on this thing. First of all, Professor Rao, I'd like to know, I'd like to understand rather this fascination of Americans, this romanticism of Americans with activism, with anarchy, with noise, with street protests, with demonstrations. You know, they have always stood up in the name of democracy for demonstrators in Iran, demonstrators in Egypt, demonstrators in Tunisia, और हर जगह पे इनको अपने घरों में बैठकर जो लगता है कि दुनिया में कहीं गड़बड़ है और अमेरिकन शायद जाकर उसको संभाल लेंगे, और जब जाते हैं तो उसको संभाल नहीं पाते हैं और बिगाड़ देते हैं। जब वो वापस आते हैं वहां से, जब इजिप्ट में होस्नी मुबारक को हटाया गया और होस्नी मुबारक के बदले में जो इस्लामिक ब्रदरहुड वाला आदमी आया, वो बहुत ही खतरनाक आदमी था। तो ये आप जिसका समर्थन करते हैं लोकतंत्र के नाम पर, वो लोकतंत्र का दुश्मन होता है असल में। Yes, Professor Rao, you may answer that in English, of course. Yes. Yes. Well, you're raising some, big questions. These are, and these are not new ones. The U.S. has been the world's policeman. Yes. People have said, and that is because of the the nature of the Cold War dynamics, the whole power balance then, and we can rehash that whole era and decades, and we won't learn much. I think what was done was sought to be done and rationalized with clear real politic issues in mind, and therefore coming to the present, I keep saying this in so many ways, and this may happen across the world. Mantosh Sharma ji is very right in kind of identifying those those constituencies that basically kind of shepherded and made use of. And that was, he did not build that constituency. That is there. The Bible Belt, the Dust Belt, the Sun Belt. These are parts of the American political lexicon. This is not anything new. But then he kind of said, in this particular context, now that so many jobs have gone, and the new jobs, and the very powerful people in Silicon Valley are so many of these are Chinese and Indian and Bangladeshi and Turkish and so on. These are not the kind of white people that we were used to as thinking of billionaires. Right. So there are all kinds of interesting
age and region and other issues that come into play. So, for example, here at Columbus State University, in the computer science department, 90% of the faculty are international faculty. About 75% of the faculty in the business department, international faculty. But if you go to the humanities and social sciences, you will still see, mostly white, a lot of women, lots of blacks and so on, but you don't see them in the technology business areas. So there are all kinds of interesting dynamics at play that people have not been able to sort out. And unfortunately, here again, I keep saying that Trump was simply the wrong spokesperson. He just did not know how to articulate. We talk about content and style. So even though on content, he's maybe, his instincts were right, his style basically undermined whatever he was trying to do. And I think we got to acknowledge that if you've got to make sense. And unfortunately, what has happened in India, I think we think about, Pakistan and China and so on. We somehow have this idea that those of us here don't care for those issues. I think we can have both us and China issues and walk it too, while supporting Biden and Harris. But many of us also held our noses this time and said, look, there's no good choice. Because it's a much more complicated situation simply because of the personality of Trump. Right. श्रीकांत जी, जैसा कि मंतोष जी भी कह रहे थे कि ये जो आप वादे करते हैं और उसके बाद वादे निभाना, ये भी एक बड़ा इशू है कि शायद कुछ ऐसी बातें थी जहां पर ट्रंप ने बड़े-बड़े वादे किए, या तो वो ठीक से इकोनॉमी को चला नहीं पाए, या फिर एक वर्ग के लिए चला पाए और उन्होंने समर्थन भी किया उनका वोटिंग के दौरान। क्योंकि एक चीज मैं बार-बार अपने दर्शकों को बता दूं कि ट्रंप हारे नहीं है। अभी ये कहना प्री मैच्योर है, जनवरी तक कुछ भी हो सकता है और अभी कई सारे केसेस होंगे। तो आपको क्या लगता है श्रीकांत जी कि ये वादा पूरा न कर पाना और जो प्रोफेसर राव कह रहे हैं कि उनमें वो पॉलिश नहीं थी, एक राजनेता को जैसे बोलना चाहिए वो वैसे बोल नहीं पाते, बड़े अक्खड़ किस्म के थे जो लोगों को पसंद नहीं आया? नहीं, बिल्कुल ये इसमें कोई दो राय नहीं है, जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है कि कहीं ना कहीं अक्खड़पन जो है वो भी मायने रखता है। देखिए जो स्टेटमेंट होता है, मतलब आप सोचिए जो राजनेता होता है और अमेरिका का खास तौर से राष्ट्रपति हो और या फिर किसी मतलब किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष हो, थोड़ा सौम्य होना चाहिए, थोड़ा बहुत तो सौम्य होना चाहिए और थोड़ा बहुत उसको मतलब राजनीतिक तौर पर बात करनी चाहिए, डू एंड डोंट्स का ख्याल रखना चाहिए। लेकिन ट्रंप को आप देखें तो वो अक्खड़ किस्म के, और क्योंकि वो उनका वो निकल के भी आते हैं। मुझे याद है कि मैं पहले ट्रंप की फाइट जो है वो WWF और E में वो देखा करता था, तो मैं अपना दिमाग ठोकता था, यार ये वही है क्या, जो ये बन रहा है। आप देखिए कि एक प्रोग्राम के अंदर ट्रंप के सामने कोई मिमिक्री आर्टिस्ट है और हॉलीवुड के बहुत बड़े अभिनेता हैं, उन्होंने कहा कि वो सबसे बुरा और सबसे वाहियात दिन होगा जब ट्रंप जो है राष्ट्रपति बनेंगे। तो किस तरीके से ट्रंप जो है उसके सामने बिहेव करते हैं। कहीं ना कहीं देखिए इसमें कोई दो राय नहीं कि ये देश के प्रधानमंत्री, वर्तमान में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से सीखना चाहिए कि एक राजनेता के तौर पर वो कैसे एक खून के घूंट, जहर के घूंट जिसे कहते हैं, उसे पी लेते हैं, मुस्कुरा के चल देते हैं, गालियां खा लेते हैं। वो एक दो प्रोग्राम उन्होंने कहा भी कि मेरा जो भोजन है वो गालियां ही है। तो कहीं ना कहीं ये सीखना चाहिए। और जब आप अमेरिका जैसे देश के राष्ट्राध्यक्ष है, राष्ट्रपति है, तो कहीं ना वो फक्कड़पना और वो सारी चीजों को साइडलाइन रखना चाहिए, इसमें भी कोई दो राय नहीं। बाइडन को आप कितना भी कहें या जी, इस मुद्दे पे ट्रंप नहीं हारा है कि वो कैसे बिहेव किया है, आप लोग को समझना चाहिए। वी आर टॉकिंग बताइए आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? ये गलत है। हम एग्जांपल देंगे लालू के। लेकिन देखिए पूरा विश्व ट्रंप को एक फक्कड़ मुंहफट की तरह देखता है ना, पूरा विश्व। आप देखिए ना, लेकिन और अनप्रेडिक्टेबल आदमी है ट्रंप, कब क्या बोलते, किस मुद्दे पर किस तरीके से बिहेव करते, उसी से उसका बेस और स्ट्रांग होता है। जो हम आपको 3 कोलिशन बताए, दे फायर
इतना फायर अप होता है कि रिपब्लिकन जो ट्रेडिशनल रिपब्लिकन है वो डर जाते हैं, खुल के सामने बोलने से डरते हैं। लालू इसी ढंग से 15 साल वही उसका कैरेक्टर है, गन्ना कार से तेरा निकाल के गन्ना चुपता हुआ जाता था कि वो गांव से जुड़ा हुआ है। लोग ड्राइंग रूम में गाली देते थे कि लालू। लेकिन यही सवाल मैं अगर प्रोफेसर राव से करूं, प्रोफेसर राव, you are saying that he may have some brilliant ideas, but he's a very bad spokesperson of those ideas. On that, America has got a system of primaries. The Republican voters had the choice of rejecting him in 2016 before making him the presidential candidate. Why did they not do that? It depended on the other candidates that they were considering, and about who would be able to accomplish, the kinds of goals or plans that they wanted accomplished. But again, we have to be careful here. In economics, we say bad coin drives out the good. Trump basically drove out the good candidates. And that race to the bottom, we got to be careful here. Sure, this where people have said he's a demagogue, he's this and that and so on. And we have to acknowledge that, because yes, we can pander to groups, and while we may get kind of short-term leverage and short-term success, that merely adds to the very complicated dynamic that Trump was either unwilling to see or did not know how to manage. You can always light a fire, but you should also know how to be able to tamp it down. So if you don't know that, then basically he has lost control. And that, I think, but again, as I keep saying, Trump was on the right direction in terms of economic policy, in terms of industrial stuff, in terms of security and national stuff, in terms of immigration. These are all big concerns that every American is concerned about. But तो एक मिनट सुजीत जी, मंतोष जी और रमेश राव जी से भी मैं एक सवाल है मेरा कि इसका मतलब यह है कि केवल भारत की जनता नहीं, जो इंटरनेशनल जो वोटर्स हैं वो भी कूड़ मगज होते हैं क्या? जो देश का राष्ट्राध्यक्ष जो है, जो अच्छी पॉलिसीज को लेकर चलता है और जो बेहतर चीजों को प्रमोट करता है, मैं इस बात से इत्तेफाक रखता हूं कि ट्रंप कहता है कि अमेरिकन फर्स्ट की नीति सबसे महत्वपूर्ण है। मैं बाकी देशों के बारे में सोचूंगा नहीं, मैं यूएन के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं कहीं नहीं जाना चाहता, मैं अमेरिका के बारे में सोचना चाहता हूं। तो आपको लगता है क्या अमेरिकन इतने मूड मगज हैं, यानी कि इतने है कि वो ऐसे जो राष्ट्र को लेकर चल रहे हैं, जो राष्ट्र के बारे में राजनेता सोच रहा है, मैं ट्रंप से इत्तेफाक रखूं या ना रखूं ये अलग विषय है, तो ऐसे वोटर्स को क्या हो गया? क्या वोटर्स भी राष्ट्र से अलग सोचते हैं? क्या राष्ट्र उनके लिए एक शब्द है या राष्ट्र भी वो कुछ समझते हैं? राष्ट्र है, हमेशा रहा है, दैट्स हाउ। लेकिन ये फेडरल राष्ट्र है, अपने आप में सोचने का हक है। एक नहीं है कि वो बोल दिए सेंट्रल से और सब उसी का पालन करें। इतना सोचन विचार का राष्ट्र आपको दुनिया में नहीं मिलेगा, इतना खुल के बोलना, इतना हक देता है कि अपने ढंग से नहीं। ये जो 50 राज्य हैं, आज तक कोई दुनिया में कोई किसी कंट्री में नहीं हो सकता। नहीं तो ये चाइनीज इंटरवेन जो कर रहे थे, चाइनीज ने जितना प्रॉब्लम किया यूएस में, तो जो उसके खिलाफ बोल रहा था उसको तो आपने घर बैठा दिया। तो आपको वो चाइना है, as I said here, it is a transaction for US foreign policy, it is a transaction। रूजवेल्ट के समय पे हुआ था, लोगों को लगा कि रूजवेल्ट सैन्य वृद्धि कर रहा है, रूजवेल्ट सैन्य वृद्धि नहीं कर रहा था। रूजवेल्ट ने पूरा ये नाव से जो ट्रेड हो रहा था, ट्रेड राउट को कब्जा किया, लड़ने के लिए नहीं, ताकि सामान दुनिया को बेच सके। एंड दैट्स द वे यूएस बिहेव टू द वर्ल्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यूएस बिहेव। तो इस मॉडल में भी चाइना से, मंतोष जी और रमेश राव जी को मुझे लगता है कि यूएस का जो वर्तमान की स्थिति है बेहतर समझते हैं। एक लाइट नोट पे एक और सवाल पूछता हूं, आपको लगता है मंतोष जी, मुझे दो चीजों में विरोधाभास दिख रहा है श्रीकांत जी, मुझे दो चीजों में विरोधाभास दिख रहा है। मंतोष जी जो कह रहे हैं कि 50 राज्य जो हैं यूएस के, वो स्वायत्त हैं, अपना निर्णय स्वयं ले सकते हैं, लेकिन वो राष्ट्रवाद के आड़े कैसे आ रहा है? क्या मान लीजिए अगर आप टेक्सन है,
यदि आप टेक्सन हैं या फिर आप ओहायो में रहते हैं या आप शिकागो में रहते हैं या कैलिफोर्निया में रहते हैं, उसमें आपके स्वतंत्र निर्णय में राष्ट्रवाद आड़े कहां आ रहा है? ये कैसे, मैं समझ नहीं पा रहा हूं। राष्ट्रवाद एक राज्य को लेकर है, नहीं उनका राष्ट्रवाद एक राज्य को लेकर है, उनका राष्ट्रवाद यूनाइटेड अमेरिका को लेकर नहीं है। नहीं, दो अलग अलग राष्ट्रवाद की थ्योरी है। आप अपने डेफिनेशन से ट्राई टू फ्रेम आउट अमेरिकन नेशनलिज्म, ऐसा नहीं है जो आज अपने प्रेसिडेंट। मंतोष जी, मुझे लग रहा है, माफी के साथ मंतोष जी, मुझे लग रहा है आप मुझे हवा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, पर मैं हवा देख नहीं पा रहा हूं। मेरी आंखें इस लायक नहीं बनी है कि मैं हवा देख पाऊं। क्वेश्चन ट्रम्प पे था, कैसे जीत रहा है, कैसे है, ये दूसरे सब्जेक्ट है, हाउ अमेरिकन नेशनलिज्म बिहेव एंड कैसे ये मैच नहीं कर रहा है इंडिया। What I cannot understand is how are nationalism or patriotism and federalism in conflict with each other? They shouldn't be. तो कॉन्फ्लिक्ट है कहाँ पे? यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आपको लग रहा है, यहाँ के सिटीजन को नहीं लग रहा है कि हमारे नेशनलिज्म और फेडरलिज्म में, लोकलिज्म में कोई कॉन्फ्लिक्ट है? जितने चाव से, जितने हम तो ऐसे जगह रहते हैं कि सारे रिटायर्ड आर्मी के ही लोग हमारे, जैसा कि श्रीकांत जी, अगर हम इसको भारतीय परिप्रेक्ष्य में समझने की कोशिश करें, गुजरात में कहते हैं कि धंधो छे, ठीक है, क्या गंदा है लेकिन धंधा है। मतलब कि अगर चीनी भी आकर हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उससे हमारे धंधे में फायदा हो रहा है, तो चीनी से हमें कोई मुसीबत नहीं है। एग्जैक्टली। आशीष जी, लेकिन कब्र वो चीनी खोद दे, वो धंधे के चक्कर में कब्र खोद दे, उसका कोई हिसाब नहीं है। वो कब्र खोद देंगे लेकिन उसका हिसाब नहीं है। एक जो पॉइंट मिस हो रहा है वो 2020 फरवरी। हाँ, आप वो ईयरफोन का स्पीकर जरा नजदीक लाकर बोलिए। हाँ, कोविड क्राइसिस जब से यूएस में स्टार्ट हुई, उसके बाद से अगर आप देखेंगे, बेसिकली ट्रम्प की पॉपुलैरिटी का ग्राफ जो है वो अप डाउन होना शुरू हुआ या डाउन होना शुरू हुआ। उसमें जो उनका जो प्रेजेंटेशन था टू द पीपल ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, वो किसी को तो बहुत ब्रेजन लगा, किसी को लगा कि ये सुप्रीम फ्रीडम वाला चीज है, बट द वे ऑफ हैंडलिंग ऑफ दैट क्राइसिस has not gone down well with the elderly people. That is my assumption, because a lot of elderly people have lost their lives. And this is the COVID crisis itself can be among the few of the reasons why Trump has not done well. But right. I agree with the Mantosh ji's assessment that Trump was speaking to his constituency. He was not speaking to anyone else. He was basically. But did his constituency fail to come out in large numbers in his support on the crucial days? Maybe that is a possibility, and that Mantosh can answer very well. But I want to bring another topic which we have not touched. That is basically the social media influence. The lot of social media like Facebook, Twitter, and like the other the media owners, they have come openly in their support, and their medium has been used brazenly to basically address the cause of one particular party, which is Democrat, rather than basically going for the favor of the Republican. And plus the news channel, plus basically the media outlets, they were having a single-sided approach towards the Democrats. So we have not discussed that part, and maybe I am not qualified enough to basically comment on that. But I want to know basically the views of Mantosh on this, that how he sees what is the influence of social media and media in the outcome. Before going to Mantosh, Yuvraj, he was up against such a formidable enemy, not just in the form of Democrats or Joe Biden, but also in the form of Twitter, in the form of Facebook. Imagine Twitter or Facebook daring to censor Narendra Modi's tweets or data that he shares, saying that this is fake news. You know, I'm not saying what Trump says is the truth. What I'm saying is, does a supposedly neutral medium have the authority to act as a fact checker? Let the people decide what is the truth and what a lie is. Why should you not let people read what Trump is writing? Yes, Yuvraj.
Sir, when we talk about social media, first of all, what you said, if it would censor what Narendra Modi says, that's not going to happen because Narendra Modi chooses his words very carefully and he ensures that he doesn't upset people. So some people would call him a people pleaser, but then that's a separate thing. Donald Trump has used Twitter as as Narendra Modi addresses the media to the people. Twitter has been the medium with which he is connected with the people because he's got 62 million followers or something like that. Now, Twitter is again a left-leaning medium. Whether one denies it or not or accepts it, that's a separate thing because it very clearly last week Mahathir Mohamad's account wasn't censored the manner in which President Trump's tweets have been the manner in which it has been. There was just one tweet which was removed, which was it violated the policies. But the manner in which each and every tweet of President Trump has been, there has been a sort of a disclaimer put over it, or some have been removed. You cannot see it. So that way they have censored it. And this also one more point, sir, that is the mainstream media yesterday have boycotted his statement because they allegedly it was false. Now, okay, again, he's been saying false things for the past 4 years. But if the media allows censorship in this way, social media gets another kind of leverage because there are no. So I'd like to take that to Professor Rao. Professor Rao, yes, sir, that is... unmute yourself. Take the case of Wisconsin. विस्कॉन्सिन में 3,64,000 वोटर हैं. मान लीजिए कि ट्रंप लिखते हैं 3,70,000 है, 370,000, और वो आंकड़े सही नहीं है लेकिन बहुत बड़ा झूठ भी नहीं है. ट्विटर को क्या अधिकार होता है उसको छिपा देने का? ट्विटर को वो अधिकार होना चाहिए क्या? A brave new world of social media, and it's very, very, very unfortunate that the president of the most powerful country in the world seeks to misuse social media. Let's be clear about it. How do we know that Biden does not? How do we know that Biden does not do the same thing? Because okay. No, we know because it is there. It is there in public. It won't go away. Right. No, we have to be very careful. It's very unfortunate. Repeat this. See, this is where, because he sought to play politics, and that is not the way that a leader is expected to behave. And to this, I mean, just yesterday he said, "Oh yeah, I have won the election. It's all these are all fake voting, false numbers, and so on." Right. Without any kind of evidence. And that is, once you see, and again, if this were TAS or Prada or whatever, sure, you can do it. But then social corporations, they're private corporations. Right. You are using their platform. If you're using my platform, I can shut you off for whatever reason. But then, especially if it's for a reason of spreading false news, of provoking people, of creating, basically disturbance and being a nuisance, then we have to really step back and say, who is leading, who is following, and what are the effects? Do that. I think it's a slippery slope, and it's going to be Professor Rao ये मानते हैं. प्रोफेसर राव ये मानते हैं कि ट्विटर को अधिकार होना चाहिए सेंसरशिप का. आप इस बात से इत्तेफाक रखते हैं? मैं बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता. जैसे कि ट्विटर ने मुझे लगता है ट्विटर और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स जो होती हैं, मैं ये मान सकता हूँ कि वो अनबायस्ड है, लेकिन उसमें काम करने वाले बायस्ड हो सकते हैं. ज्यादातर ट्विटर और फेसबुक और तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स आप देखेंगे तो उसमें काम करने वाला एक खास विचारधारा का होता है, एक खास दृष्टिकोण का होता है, और वो पॉलिटिकल पार्टी से लेकर सोशल नेटवर्किंग साइट्स को इस्तेमाल करने वाला जो व्यक्ति है उसको फ्री हैंड नहीं सोचता, उसको अपने हिसाब से कसौटी में ढालता है. ट्विटर में आप देखिए, जैसे कि आप कुछ भी ऐसा लिखेंगे जो उनके हिसाब से ठीक नहीं है, मतलब मैं सच लिखूं और तो वो उसे माफ कर देंगे, मुझे हटा देंगे. यानी कि छोटा सा उदाहरण दूं मैं आपको कि
यहाँ गुरुग्राम में एक महिला का रेप जो है वो क्या कहते हैं मौलवी ने किया, और टाइम्स ऑफ इंडिया ने उस खबर को इस तरीके से छापा कि एक पुजारी ने महिला का रेप किया। जब टाइम्स ऑफ इंडिया ने इस खबर को छापा और ट्विटर पे ट्वीट भी किया, मैंने ट्विटर को टैग किया और टाइम्स ऑफ इंडिया को टैग किया, और मैंने उसको पूरी खबर बल्कि एक लिंक के द्वारा बताया। ट्विटर ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया, मैंने दोबारा लिखा, फिर डिलीट किया, तीसरी बार मुझे ब्लॉक कर दिया। ऐसा ही वाक्य फेसबुक पे हो गया। मतलब सच बोलना, मैं अगर सच बोल रहा हूँ, अच्छा फैक्चुअल में मेरी बात में कोई गलती नहीं थी, एफआईआर की कॉपी में गलती नहीं थी, गुरुग्राम की पुलिस जो चीजें बता रही है उसके हिसाब से गलती नहीं थी। गलती क्या थी कि मैं उनके परसेप्शन को सेट नहीं बैठ रहा था, यानी कि मैं जो चीजें बता रहा था वो सोशल नेटवर्किंग साइट्स के हिसाब से ठीक नहीं है। मतलब मैं सच बोलने की कोशिश कर रहा था। तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स का सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि वो पूरी तरीके से बायस्ड है एक विचारधारा को लेकर, क्योंकि वहां काम करने के पास ये अधिकार ही नहीं होना चाहिए कि वो सेंसरशिप करे। क्यों मैं बता रहा हूं, अगर हम राइट विंग की बात करते हैं तो राइट विंग एक सोशियोलॉजी होती है, राइट विंग एक इकोनॉमिक्स भी होती है। राइट विंग इकोनॉमिक्स के हिसाब से सब कुछ प्राइवेट सेक्टर में होना चाहिए, गवर्नमेंट के पास कुछ भी, केवल डिफेंस वगैरह के अलावा, फॉरेन पॉलिसी के अलावा सब कुछ प्राइवेट होना चाहिए। तो आप सोचिए कि एक ऐसा विश्व, एक ऐसा भारत या एक ऐसा अमेरिका जहां सब कुछ प्राइवेट सेक्टर है और पब्लिक सेक्टर में कुछ है ही नहीं, तो वहां पर ट्विटर का भी या फेसबुक का भी कोई गवर्नमेंट काउंटर पार्ट नहीं होगा। You are giving them a domain which is a domain of commentary on current affairs. If you give the managers of that domain the right to censorship, I'm not talking about who is right, who is speaking the truth and who is lying. I'm talking about the right to censorship. Is it not supposed to, stay back and have a hands-off approach? What do you think? Yeah, definitely. See, Ashish, all the social media platforms should be aware of their limitation, that they are not government. They are basically connecting platform where people are exchanging information and their views can be of the varied nature. So it doesn't give them basically an opportunity to intervene as a censorship board. Right. The debates which I have seen in basically in the Senate, where the people have been called from social media networks, and they have been basically grilled by the senators. So there is basically a perception which I have got that these companies, they think that they own a moral responsibility over them, which has not been thrust over them. Which exactly is the problem. Yes, Mantosh, consider this fact. Before this, all this censorship had begun on Twitter and Facebook, we used to have almost a free run on a medium called WhatsApp. Now, in WhatsApp, you can form a group of 256 members. And you keep receiving all kinds of nonsensical messages there. But despite no intervention from WhatsApp, people can figure out what is the truth and what is a lie. Why do we need Twitter or Facebook to tell us how to screen out the truth? Simple है, ना use करो. मेरा point है, the way I took it, Twitter, social media and everything is a tool in political fight. It is not in end itself. And both जो भी पार्टीज लड़ती हैं, एक लेवल के बाद वो सैचुरेशन पॉइंट पे यूज हो जाता है। ये टूल्स किस हद तक लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न करने लगता है और बहुत जल्दी ही ये इमिटेट करने लगता है। एक छोटा सा उदाहरण अपने एग्जांपल से देता हूँ। एक स्टेट इंडिया में एक दोस्त के एमपी इलेक्शन में मैं गया था, अपोजिट पार्टी में। आई वाज डिफाइनिंग द स्ट्रेटजी। एक अपोजिट पार्टी के पास काफी पैसा था, काफी था बड़ा, और मेरे पास केवल 5 इंजीनियर थे एंड वी हेवीली check them on the social media side just with the help of 5 engineers, because very easy you can do it if you have 5 engineers. So point ये था कि political fight में ये social media का tool है, एक लिमिट तक आता है, उसके बाद लेकिन सोशल मीडिया को खुद कोई एक पक्ष लेना चाहिए क्या? चाहे इस पक्ष हो या वो पक्ष हो, ये पक्ष हो या वो पक्ष हो, तो वो उनका since it is a name itself is a social media, अब आप कह सकते हैं कि चौपाल पे लोगों को ऐसे ही बात करना चाहिए क्या कि दो इधर बोले दो इधर बोले? ये मीडिया है, सोशल है। उसी तरह मीडिया, प्रिंट मीडिया भी 5 जन्य है और दूसरा है, आप बोलो सामना है,
सामना में अपनी तरफ से। ये चौपाल की कहानी डिजिटल पे हो रही है, दैट सही है। नेशनल हेराल्ड, हाँ, नेशनल हेराल्ड भी है। प्रॉब्लम क्या है सर, सोशल मीडिया को आप अपने हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब चुनाव में इस तरह से इस्तेमाल होता है तो उसका परिणाम पूरे देश पे पड़ता है ना। एज लॉन्ग एज ये कानून के सम्मत में हो रहा है, किसी स्टेट के गवर्नमेंट में ये जो उद्गार है उस स्टेट या कंट्री के कानून कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स के अंदर हो रहा है, तो लेट देम प्ले। सोशल मीडिया और पॉलिटिक्स। राइट। एक लाइट नोट पे सवाल पूछना था मुझे सुजीत जी, एक लाइट नोट पर, क्योंकि रमेश राव मुझे लगता है अमेरिका से हैं और मंतोष जी भी अमेरिका से जुड़े हुए हैं। दोनों अमेरिका में हैं। हाँ, एक लाइट नोट पे। ठीक है मंतोष जी, ठीक है, हैप्पी टू नो। मैं ये जानना चाह रहा हूँ क्या ट्रम्प की आने की उम्मीद अभी भी है? क्योंकि सन 2000 में आपने देखा जो जूनियर बुश है और डिसाइड हो गया था कि ये व्यक्ति राष्ट्रपति बनेगा, लेकिन जूनियर बुश जो है वो एक पिक्चर में एंट्री करते हैं और पता चलता है कि साहब ये अब नए राष्ट्रपति होंगे, और वो अखबार पुराने हो गए जिसमें नए राष्ट्रपति का चेहरा भी था और नाम भी था। तो आपको लगता है कानूनी दाव पेच है, कोर्ट जाना है, एससी जाना है, सुप्रीम कोर्ट जाना है, और तमाम ये सब कुछ चल रहा है? क्योंकि ट्रम्प तो गोल्फ खेलते हुए नजर आए, तो आपको क्या लग रहा है, क्या वाकई में ये पॉसिबल है या फिर रूमर्स ही है? ये ऐसे ही रूमर है, ऐसा संभव नहीं है। इंस्टीट्यूशंस काफी स्ट्रांग है। अभी जो भी आप देख रहे हैं, ये ट्रम्प का जो बेस जो है गुस्से में है, उसको शांत करने का प्रोसेस चल रहा है। बैक द टॉपिक, ट्रम्प की अर्थी ऑलरेडी उठाने की तैयारी हो गई है। नेक्स्ट जनरेशन रिपब्लिकन ऑलरेडी दावा फेंक दिए हैं। टेड क्रूज को देखिए, घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। लास्ट मोमेंट तक पिछले चुनाव में ट्रम्प के लिए मारामारी कर रहे थे। ट्रम्प का वोट बेस कोलिशन वहां पर भी भीतर घात शुरू हो गया है। हाँ, लेकिन जब तक अंतिम फैसला नहीं होता तब तक उसमें आगे कोई कार्रवाई होगी कि नहीं हम बता नहीं सकते। युवराज जी प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद अ गन। हाँ, रिपब्लिकन प्रोटेस्ट कर रहे हैं विद अ गन। और युवराज जी, सोशल मीडिया के प्रश्न पर अभी भी वो चल रहा है, क्योंकि अभी मुझे सारे जवाब नहीं मिले हैं। युवराज जी, आप ये बताइए कि एक तरफ तो ट्विटर, फेसबुक वगैरह अपने अपने तरीके से सेंसरशिप करते हैं, दूसरी तरफ इवन इन कंट्रीज वेयर इट हैज नॉट गेन्ड एंट्री सो फार, फॉर एग्जांपल China does not have Facebook, China does not have Twitter, it does not have even YouTube. But all these three players bend over backward, they fall over each other to appease the Communist Party of China. You know, you post a video that goes against the CCP, and the video will be pulled down from YouTube. You make a mockery of Xi Jinping, and you will be banned from Facebook. What's happening? Sir, simply speaking, as I said, that the organization is left-leaning. So they have their own biases towards them. Again, but that's very simply speaking. But they want the huge market that China is. They want that market. They want the huge market, sir. Also, the fact that all these organizations have links with very deep pockets. And yesterday, if we had seen when Joe Biden was declared the victor, Beijing erupted, as in all the people were very happy over it. Yes. And whenever people in Beijing erupted, Muslims were on the forefront, rejoicing, celebrating this verdict. Yes. अभी नॉर्थ पोल और साउथ पोल उनका घूमना बाकी है। हाँ, अभी घूमना बाकी है। जितने भी डोनाल्ड ट्रंप के जो मीम्स बन रहे हैं और ट्विटर पे आ रहे हैं, अधिकांश मुसलमान उसको पोस्ट कर रहे हैं। हाँ, ये सही बात है। और पता नहीं क्यों, अच्छा, ना बाइडेन उनको जानता है, ना ट्रम्प उनको जानता है, ना बाइडेन से कुछ मतलब है। वही बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बेगानी शादी में अब्दुल्ला। तो ये अब्दुल्ला बाइडेन की जीत में दीवाना हुए फिर रहा है। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि इनके गुर्दे क्यों लाल हो रहे हैं, इनको कौन सी खुशी मिल रही है। ये लोग 3 साल पहले इमैनुअल मैक्रोन को भी मना रहे थे, लेकिन फिर वो कहानी थोड़ी बदल गई। सर, प्रेमचंद ने कहा है, जो सवाल आपने युवराज से पूछा, मैं उसका एक छोटा सा एक लाइन में जवाब दे दूं। प्रेमचंद ने कहा था, प्रेमचंद ने कहा था कि जिसको जितना कूटा जाता है, थिथरई जिसके साथ जितनी होती है, जिसको जितना दूर भगाने की कोशिश
किया जाता है, ग्रेविटी के नियम के हिसाब से वो आपसे उतना ही चिपकता है। तो जिस तरीके से शिटलर जो है, शी जिनपिंग को मैं शिटलर कहता हूं, तो शिटलर जितना ट्विटर, फेसबुक और सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर, मैं तो शिटलर ही कहता हूं। 11 जिनपिंग कहा था। Okay, Professor Ramesh Rao, another issue that I see changing in case Biden becomes the 46th president of the United States is that, you know, Trump was time and again summoning these social media giants to his office, seeking explanations to their conduct. That will also stop. It's not just that the action on Islamic terrorism will stop. The action on, finding out who the Chinese moles are, even in institutions no lesser than Harvard University. You know about the arrests that were made. So all this is going to stop. And obviously, you know, Jack Dorsey, Mark Zuckerberg have reasons to celebrate. Their life is going to be easier under Biden. Not necessarily. I don't think we have understood social media yet, because no one, scholars are struggling to really kind of define the ambit, the parameters within which social media work. But, yeah, you're right that, in terms of social media personnel, those who monitor, who control, not on the technology side, but on the messaging side, they tend to be more left and liberal, the whole Silicon Valley kind of thing. The same thing with Wikipedia. But it's also even in terms of Google searches. And I think the people at the top, whether at Facebook or Twitter or Google, are also scratching their heads about how to control their own staff, their own employees who want to now take charge of the house that they have built. So it's the same issue that will dog, and I don't think, this issue is going to go away. The courts will have to come in at some point in time. Someone will take this issue. Congressional committees are into it. The FCC will look into it. But it is a kind of a beast that we have not been able to understand. It is too large, and those who have built it don't have a clue really about how to manage it. And so, clearly, in terms of traditional media, we know that there is gatekeeping. We know that there is agenda setting. So clearly, SIRF News will not publish what readers are going to say on your platform. Otherwise, it's going to be mayhem. But then, social media is, some people say it's not media, traditional media. What is it? But then we want to control it like traditional media. So there are all kinds of challenges, technical challenges, as well as policy challenges that is going to, attention of Congress, of the FCC and academics ourselves. We are trying to struggle to figure out what are all the kinds of effects of social media, and it is a beast that we really don't have a good idea about. Right. Mantosh ji, finally, how do you see the coming 4 years shaping up for the United States and the rest of the world? So for next 4 years will happen two way. One is the international way, the way Trump was resetting in international policy of the US. जैसे NAFTA से, Transatlantic Pacific Treaty से कई ट्रीटों पे एजर्ट कर रहा था, वो एजर्टनेस लेस होगा. But keep in mind, assertness होना या ना होना, it is always in the interest of the US होता है. ये people भूल जाते हैं. They start looking with the government or the head. US interest first is always there. Just ये है कि Trump बोल दिए. US interest in non-transactional is always last 50 years का study किए हैं. That is the one thing you will notice happening. Second notice you will start happening post-Trump Republican side में. Republican was working very hard Obama की election के बाद to go in the minority, and they saw in this election also paid them really well, particularly in Florida. South Florida में Spanish population, Cuban Spanish जो majority में है, totally voted Republican Party.
राइट। Similarly, men black. लेकिन आप मान के चल रहे हैं कि ट्रम्प हार चुका है और बाइडेन जीत चुके हैं। Trump is done. Right. Well, no question on that. Yes. Right. Yuvraj, final words. Last 4 years, how do you see them? How do you foresee them rather? Next 4 years. Yuvraj, how do you foresee the next 4 years? Sir, the next 4 years will be America returning to civil and more polite language, but it will be going back to the same bureaucrats, the same as Putin said, that as the new president comes, the same set of bureaucrats train them as the preceding presidents were trained. And only the policies will reverse, going back to the WHO, going back to the JCPOA, going back to the UN climate change, Paris Climate Agreement. Right. But also going back to China and Pakistan and all that mess. हम लगभग वो अमेरिका को वापस पाएंगे जिस अमेरिका से हमें कोई खास दोस्ती नहीं थी। Ramesh ji, final remarks. Next 4 years, how do you foresee them? Surely the policy wonks are going to be back in place. Mantosh ji is right that America's interests are going to prevail. But what we can say is that the Biden administration will seek to bring back people who will propose and follow a more the traditional American thing. NATO relationships, NAFTA again, but again, we will see that immigration is still going to be an issue, but it is what it's going to be done quietly, just like Obama did. Obama sent back more Mexicans across the border than Trump did. Right. And we are going to be, with climate change issues, with WHO and so on. But India should be careful in terms of the China-Pakistan dynamic. But I believe, despite the Pakistani-American advisors that Biden has in his team, and the kind of leftward tilt of the Democratic Party, the Ro Khannas and so on, it's going to be tricky. But I believe the establishment will prevail. Okay. But as Minister Jaishankar said, India should be and is ready to engage whoever is back in power. Yes. तो इसी प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से, आशीष जी आपके पास फाइनली आ रहा हूं, इस प्रश्न को मैं दूसरे तरीके से रखता हूं कि भारत के लिए अगले 4 वर्ष कैसे होंगे इस स्थिति में, क्योंकि बाइडेन के राज में भारत के लिए, बाइडेन का राज जब अमेरिका में चल रहा है, तब भारत के लिए अगले 4 वर्ष अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र में कैसे होंगे? देखिए, उसका हिंट हमको अभी मिल गया जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करा था जो बाइडेन के लिए। माइक को नजदीक लाकर बोलिए ऐसे। So he is trying to reach out to Joe Biden at the very early, as other world leaders are trying to move. Right. But I think as early we will try to make personal contact or personal relation establishment with Joe Biden. I think it will be more helpful for Indian establishment to move forward. But वो तो डिप्लोमेटिक स्तर पे तो होगा ही। बट लेकिन एक चीज है कि हमको अब वापस जो है ना वो पॉलिसी नेगोशिएशन, कोई वन साइडेड ट्रीटमेंट नहीं मिलने वाला। वही सेम जो है पुश एंड पुल लीवर्स जो हैं हमारे लिए आएंगे कि वो वन ऑफ द पॉलिसी स्टेटमेंट आ जाया करेगा कि हमारे यहाँ माइनॉरिटीज को ट्रीटमेंट अच्छा नहीं मिल रहा है, हमारे यहाँ दलितों को ये हो रहा है वो हो रहा है। सो these type of things will keep on coming. आपको लगता है कि भारत के लिए ये बुरा हुआ? आपको लगता है भारत के लिए ये बुरा हुआ, ये जो परिणाम आए? ये सब मंकी बैलेंसिंग ट्रिक्स हैं जो पहले भी ऑर्गेनाइजेशंस में चलती रही हैं और अभी भी चलेंगी। इनका एंड में मतलब कुछ रहता नहीं है, ठीक है? वो ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप है, आप क्या उनको देते हैं और क्या उनसे आपको मिलता है। आप ट्रम्प को भारत का कोई खास दोस्त नहीं मानते? नहीं, ऐसा नहीं है। वो ट्रम्प, देखिए ट्रम्प का ये था, काम करने का तरीका अलग था। उसके साथ जो टीम काम कर रही थी वो प्रोफेशनल टीम नहीं थी, वो उसकी खुद की बनाई हुई टीम थी। उसमें थोड़ा सा एक करेज था डिसीजन लेने का। अभी जो होगा वो वापस सब जो होगा वो पॉलिसी स्टेटमेंट के अंदर सब चलेगा और होगा वही जो पहले भी हो रहा था। ट्रम्प के टाइम में जो हो रहा था वही होगा।
बट वो मोर पॉलिटिकली करेक्ट तरीके से होगा, वो ज्यादा पॉलिश तरीके से होगा, उसमें ब्रेजरनेस नहीं होगी। इट विल नॉट बी बेसिकली लाइक किसी के ऊपर थ्रस्ट करा जा रहा है, वो सब शुगर कोटिंग के साथ करा जाएगा, पर होगा वही जो हो रहा था, उसमें कोई चेंज नहीं आने वाला। एंड आई थिंक हमारे पास समय लगभग समाप्त हो चुका है। लास्ट पॉइंट है कि इंडिया यूएस रिलेशनशिप नीड टू बी लुक्ड इनटू बेसिकली अ फ्रेमवर्क ऑफ लाइक long term perspective, and I think US is basically having, if US is going against China, then India is his natural ally, other than they have no other choice. Right. हमारा समय बिल्कुल समाप्त हो गया है. To conclude, we would like to remind all our audience, the entire stretch of time since Bill Clinton's era, when India-US relations began improving by leaps and bounds. And if you look at the sequence, Bill Clinton, then George Bush Jr., Barack Obama, and Donald Trump, we haven't seen that kind of an inconsistency in the US's India policy or Southeast Asia policy. But what we have seen as a welcome change during the last 4 years is straight speak from Donald Trump, which perhaps came from the fact that he was not dyed-in-the-wool politician. He had come from a business background who perhaps did not know how to speak. But did the Republican voters do justice to him? If our friends from America are to be believed, yes, his constituency did not let him down, but there have been other factors which led to his probable loss, which we cannot announce formally until the US announces it formally. But overall, these are going to be some tense 4 years. The coming 4 years are going to be tense for India in particular. And we also do not know what is going to happen on the South China Sea front, because Biden does not appear to be too keen on pursuing China away from the Pacific region. But overall, the message that we get from Trump's unclear defeat is that you ought to keep your promise. You ought to also be a polished person to survive in politics. You cannot be brash, because that will cost you dearly. That is all the time we had, ladies and gentlemen. Thank you for being with us in this show of SIRF News called Wait for 8. Thank you very much. Good night.